Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's OCM class. In the last class, we already seen the different functions of marketing. Yes, earlier we have seen number 1 point, that is marketing research. Number 2 is buying and assembling. Number 3 is market planning. Number 4, product development. Number 5, standardization and grading. And number 6, packaging and labeling. In this class, we have to see the remaining your functions. Here we have to start with the branding. Now everyone knows that branding word. Yes, we are using a brand word. Brand means what? This is some special identity given for the product by the businessman. यानी आपका जो प्रोडक्ट होता है तो उसको एक स्पेशल आइडेंटिटी होता है और ये आइडेंटिटी यानी आपका स्पेशल आइडेंटिटी होता है जिसकी वजह से यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स इफ यू वांट टू परचेस अ पेन, आपको पेन लेना है, but if you are suppose you are having brand savvy, so when you visit to the particular stationery shop, you're going to ask for the particular pen. For example, some Mr. A wants a Renault pen, Mr. D wants a Parker pen. That means this is a call, you can call it as a brand, and this brand is nothing but special identity given to your product by the businessman. And what is the use of this branding? Where you can differentiate your product. Businessmen, they can differentiate the product as well as the consumer can differentiate the product according to their pocket. Next is every businessman want to have a special identity. Yes, this is a special identity given to your product. And branding is a process giving a special identity to a product through unique brand name to differentiate it from the competitor's product. Yes, brand name यानी क्या कि आपके competitors है उनके साथ compete करने के लिए you need to give a unique and different identity for your product. Next we will start with in the simple words, giving of a distinct name to one's product is called as a branding. Branding यानी क्या? You are going to give a different distinct name to the product is called a branding. Now branding is yes, after branding there is a one more concept in this part, in this function, that is the registered brands. The registered brands are known as a trademarks. Here you can remember it. The registered brands are known as a trademark. यहाँ पे trademark कोई भी कुछ भी हो सकता है. Trademark कुछ भी हो सकता है. There is a symbol, there is a brand, there is advertisement, there is an alphabet, there is a logo, shape, warranty, etc. You can call it as a trademark. Trademarks cannot be copied. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाया आपको कि मैकडोनल्ड्स का जो एम है वो लिखने का तरीका ओरिजिनल एंड द मैकडोवेल्स उसका लिखने का तरीका देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट. दैट मीन्स दिस ब्रांड्स आर टू बी रजिस्टर्ड. यस, एंड दिस रजिस्टर्ड ब्रांड इज नोन एज अ ट्रेडमार्क. हम लोग कहते हैं ना कि इसका ये ट्रेडमार्क है. तो ट्रेडमार्क यानी क्या कि वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा के जो कंटेंट है, इस रूह अफ़ज़ा सब लोगों को पता है, इट्स एन इंडियन ब्रांड. तो इसके जो पैटर्न्स हैं, उसके जो फॉर्मूला है, तो वो सिर्फ इंडिया को ही पता है. दैट मीन्स देयर प्रोसेस, देयर टेक्निक्स, what content it required, that only known to the particular brand, that means रूह अफ़ज़ा. तो वो रजिस्टर किए हैं यहाँ पे. yes, तो we will see branding. So branding part is completed. Now we will see the next important function, that is a customer support service. Yes, whenever you purchase a product you need a help, and that help provided by your customer support service. Yes, in customer is the king of the market, hence the business need to take the necessary steps for the satisfaction of the customer. कस्टमर्स आर द किंग, और इसकी वजह से क्या करना है बिजनेस को, दे हैव टू सेटिस्फाई द प्रॉपर डिजायर्स, नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर कस्टमर. यस, नेक्स्ट इज you can call business needs to take every possible effort to provide supports service to the customer.
Timely support service helps you to gain the your customers loyalty. Customers loyalty gain करने के लिए what you need to do, you have to provide as a business proper customer support service. That means उनके जो feedbacks है, उनके जो problems है, वो जितनी जल्दी business solve करेगा, that means the customer become a loyal toward the product. यहाँ तक clear हुआ? The business can provide the support service like pre-sale, consumer helpline, technical assistance, after sale service, demonstration and so on. ऐसी चीजें जब प्रोवाइड करते हैं बिजनेस, दैट मीन्स इसकी वजह से कंज्यूमर को क्या मिलता है, दे आर बिकम अवेयर टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उनको कैसे यूज करना है, क्या बनाना है, कैसे उसके मेरिट्स क्या है, उसको कितना वारंटी दिया है, सो दैट कैन बी हेल्प or assist by your customer support service. This is your next function. Now we will move to next important function, that is the pricing. You can see here the pricing is a good question. The pricing means what? You have to decide a particular price for your product. So pricing is the most important function as well as challenging function of the marketing. Many times price of the product decides the success or the failure of the product. यानी क्या कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन कॉल नोटबुक्स. नोटबुक के लिए यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड, सुंदरम है, क्लासमेट है, यस, डोम्स है. So these are the various brand and according to these brands you have to decide your price of the product. आपको differentiate करने के लिए आना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इससे अलग क्यों है और इसका प्राइस इतना क्यों है. So success or the failure of any product depends on the pricing function. यहाँ तक क्लियर हुआ? प्राइसिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल वेयर देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. आप कोई भी प्रोडक्ट लो, उसके लिए कंपटीशन है ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं. हर कोई प्रोडक्ट लो, आप कुछ भी ब्रांड लो, देयर इज अ कंपटीशन अमंग द टू कंपिटिटर्स. यस, this is a very important function. While determining the price of the product, businessman needs to consider the factors like a cost, desired profit, demand for the product, market condition and so on. ये सब उसको डिसाइड करना है कि सपोज उसके लिए जितना खर्चा है, उसका रॉ मटेरियल, उसके सब डिमांड कितना है, उसके लिए प्रॉफिट कितना चाहिए, ऑल दे हैव टू कंसिडर व्हाइल दे आर गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ तक क्लियर हुआ? बिजनेस नीड्स टू चेंज प्राइजेस एज पर द नीड ऑफ द प्रोडक्ट. कंज्यूमर को कैसे प्रोडक्ट चाहिए, उसके फीचर्स क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ₹10. नाउ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ₹10. आपको जो कोई बड़ा ब्रांड चाहिए, एनी यू कैन टेक अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल गुड बिस्किट. गुड बिस्किट पहले जो आता था वो 24-25 में था, बट नाउ डेज एज पर कस्टमर नीड एंड वॉन्ट्स दे वॉन्ट अ small packet of your good biscuit. So now the company or the business, they are going to provide this product then in a rupees 10 ka packet they are going to provide. So that means whenever they need to change the price of the product, they can change it and they have to give the proper justice to particular product. यहाँ तक खत्म हुआ. Now we will move to your promotional channels. प्रमोशनल चैलेंज मीन्स व्हाट? प्रमोशनल एक्टिविटी. कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, जितना ज़्यादा उसका पब्लिसिटी करोगे, उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, मार्केट में बिक सकता है. द प्रमोशन is the process of informing the consumer about the products, their features, uses and so on and encouraging them to buy this product. आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो चैनल्स पे या कोई भी टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती. दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Now there are the various promotional activities like advertising, personal selling, publicity and sales promotion are the some of the important tools of the promotion. These are the important tools. आप लोग देखते हो कि टीवी में एट वन आप कोई भी इवेंट देख रहे हो, टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो,
तो within a short or the within fraction of time you are able to see the advertisement. So advertisement is going to inform about the product, about their uses, features and so on. So these are the various promotional channels. Next is we will see the business uses all methods, all these four methods of promotion as per the need of the business. Business को जो ज़रूरत है, जिसके हिसाब से ज़रूरत है, उसके according they are going to use these techniques. एक भी use कर सकते हैं या चारों भी use कर सकते हैं. So that totally depends on your business or the product. यहाँ तक clear हुआ promotional channels. Now we will see the next part, that is the distribution. Here you can see the distribution part, and we are already seen this distribution or the channel of distribution we already studied in the 11th standard. Now what is the exactly distribution means? What production से आपका product consumer तक जाता है उसको कहते हैं distribution channels. Distribution is a set of activity which is a concern with the efficient movement of finished goods from the place of a production to the consumer. Production house से लेके till consumer the products are going, that process is called as a distribution. Next is here we can study, it includes the transportation, warehousing, material handling, inventory control and so on. These are the various um, functions used by the distribution channels. Distribution accounts for a major part of the market budget of the business. Importance of the physical distribution for a firm depends on the type of product and the level of customer satisfaction desired. यानी क्या कि आपको for example, if you are going to deal with a perishable goods, perishable goods यानी क्या, जो प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं शेल्फ लाइफ कम है, यानी उसके लिए you need a fastest channel of distribution. Take an example of milk. मिल्क के लिए you want a fastest channel of distribution, या कल मार्केट में जाना चाहिए तो आप लोग मिल्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से ही करके रखोगे? No, that means your distribution includes all your different functions like transportation, warehousing जहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, inventory control आपका inventory कितना मैनेज करना है, order processing इतना order मार्केट में जाएगा तो आप उसके ऊपर आप processing कब कर सकते हो. So all this is function included in the distribution function. Now we will see the next part, that is the transportation. One more thing is distributions account for a major part of marketing budget of a business. Physical distribution of a product is totally depends on the type of product. अभी आपने पहले पढ़ा होगा शायद टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, शेल्फ लाइफ कम है, ऐसे वाले प्रोडक्ट होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल. सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस you need to decide your physical distribution of the product. Now we will see the next part, that is the transportation. Transportation means physical movement of a goods from the place of production to the place of consumption. यानी आपकी physical movement होती है किसकी, प्रोडक्ट्स की, और वो प्रोडक्शन से लेके टिल प्लेस ऑफ कंजम्पशन यानी आपके कंज्यूमर तक जाने के लिए द फंक्शन विच यू आर गोइंग टू हेल्प, दैट फंक्शन is known as a transportation. Transportation includes transportation of a finished goods as well as of the raw material. Transportation करना है तो not only finished goods is transported, they are going to transport your raw material, they are going to transport your semi-finished goods, as well as all this is required fastest movement of your goods or the services. For that reason you need a transportation function. Transportation में क्या होता है कि transportation में you can transport your goods or your raw material or the finished goods from the production till your consumption.
There are different modes of transport. There is a air transport, there is a water transport, there is a railways, there is a road transport. So all this is mode of transport. You have to decide according to the type of product. Yes, तो इसके लिए you are going to know that transportation concept. Now here I am going to complete 12 points of transportation. Warehousing is pending, but warehousing का meaning क्या है? There is a time long lag between the purchase and or the production of goods. यानी warehousing में I'm not decided to teach you, but still for information purpose, you are supposed to remember at least 5 to 6 points related with the transportation, sorry, your functions of marketing आपको याद रहने चाहिए. तो यहाँ पे maximum points I covered, but still I want to explain you about the warehousing. What is a warehousing? कि आपका production और आपका जो consumption के बीच में जो time है, तो उसके लिए आपके products एक कोई storage में या एक warehousing एक place पे रखे जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वेयर हाउसिंग. इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग द टाइम लैग. जो बीच वाला टाइम लैग है उसके पीरियड तक टू प्रोटेक्ट योर गुड्स फॉर एज अ सेफ्टी एज अ फॉर द प्रोडक्ट यू नीड टू स्टोर योर गुड्स एट वन प्लेस एंड दिस प्लेस इज नोन एज अ your warehousing. The function of a warehousing is performed by the retailers, wholesalers, and manufacturers. Warehousing creates a time utility. On time product मिलेगा कैसे? तो for that reason you need to have a function called warehousing. यानी आपका प्रोडक्ट सेल होने से और परचेज होने के बीच का जो टाइम है उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेयर हाउसिंग पार्ट. हियर वी आई हैव टू फिनिश योर ऑल फंक्शंस ऑफ transportation. Thank you for listening very patiently. Yes, here we are going to complete all 12 functions, 13 functions of your your marketing. Yes, thank you.